it is the biggest state where the stakes are unarguably the highest. A win or a loss in this state has a huge bearing on the national political picture. We are talking about the state of Uttar Pradesh, where the BJP has dealt a massive blow in the recently held Lok Sabha election, with its tally crashing down from 63 seats in 2019 to just 33 in 2024. Now, a disquiet within the party is palpable. Now, several meetings have been held in the last 2 days between the state leadership and the central leadership to try and decode what actually went wrong for the party in Lok Sabha elections. And both UP Deputy Chief Minister KP Prasad Maurya and State BJP Chief Bhupendra Chaudhary met JP Nadda, in fact, yesterday separately and submitted BJP's internal review report on BJP's poll performance in the state. Now, the report lists reason for the party's debacle in the biggest state. Sources say that the report cites neglect of party workers and the administration working against the party as the main reason for the party's loss. The leaders told BJP national president that the state administration removed names of BJP voters from the voter list, which caused decline in the turnout of BJP votes in every Lok Sabha seats. Now, the report also sheds light on how there was a decrease in BJP's vote bank and how it hurt the party's prospects. As per BJP's report, party's vote bank has decreased by about 6 to 7% in every Lok Sabha seat. Now, there has been a significant decrease in party's Jatav, Pasi and Dalit vote in Uttar Pradesh. BJP's Thakur vote bank in the state has also decreased by about 30%, and while 80% Brahmins of the state voted for the BJP, almost 80% Yadav did not vote for the BJP. This is as per the report. Now, these internal findings by the party come at a time when there has been a massive turn in Uttar Pradesh BJP, and what created more flutters in UP's political circle was UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya's cryptic message. In fact, it was a post in which he had talked about the pain of workers and also went on to assert that the organization is bigger than the government. A message he had delivered while addressing State Working Committee meeting last week, and many are of the view that this is a veiled message at Chief Minister Yogi Adityanath. Now, interestingly, in this same meeting where Keshav Prasad Maurya was present, Chief Minister Yogi Adityanath admitted that overconfidence was the main thing that hurt the Bharatiya Janata Party in the state of Uttar Pradesh. कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और वह अति आत्मविश्वास, उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। Well, as far as BJP is concerned, the leaders say that not much should be read into what Keshav Prasad Maurya said in that meeting, and claim that his message was only meant to bolster the confidence of the party workers ahead of the by-polls. Now, but the opposition, on the other hand, they've been saying that this is a sign of nervousness and internal tussle within the BJP is quite clear. And as now a war of word has also broken out between the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya, while Akhilesh took a veiled jibe at BJP and said that the party is divided into camps and its decline has started. The UP Deputy Chief Minister hit back and asserted that both the organization and BJP's government in the state is strong and in fact in the center as well as the state as well, and that Samajwadi Party's Gunda Raj will never return in the state. कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो
कि दलाली हो रही हो, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। जनता सर्वोत्तम जान तो प्रदेश बन रहा, हर क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे, कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कमजोर हुआ, हर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश। आज के दिन में उनके पास बयानबाजी के अलावा बचा क्या है? एक दो अधिकारी हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तरह तरह को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। आज संगठन और सरकार मिलकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, लगातार काम करने का काम किया है, तब मैं कहूँगा कि इसमें कोई खास ऐसा नहीं है। संगठन और सरकार दोनों अपनी अपनी जगहों पर अच्छे से काम कर रहे हैं और एक दूसरे के पूरक। ये चीजें यूपी से नहीं चल रही, ये चीजें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीजें बढ़ गई वहाँ पे। रिजल्ट बीजेपी के मन के मुताबिक नहीं आया, तो अब ये चीज जो उनके इंटरनल रिजेंटमेंट है वो चीजें सामने आ रही हैं। Now, you heard the reaction coming from Samajwadi Party as well as Congress. Now, amid this war of words, open call for resignation have also been made in the BJP. Sunil Bharala, the former BJP minister, has demanded resignation of Bhupendra Chaudhary from the post of UP BJP's chief, going on to say that he should take the moral responsibility and quit for the defeat in Uttar Pradesh. Now, all eyes, meanwhile, are on the upcoming by-polls, which will decide what turn these signs of turn within the UP BJP will take. Well, this is as far as UP is concerned. Now, dissent is emerging in Uttar Pradesh. There have been rumbling in the state and also meeting after meeting here in the national capital. Yesterday, State President Bhupendra Singh, in fact, met with the Prime Minister. And other than that, Keshav Prasad Maurya, who's the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, and Bhupendra Chaudhary separately also met with JP Nadda. Opposition parties like Samajwadi Party and Congress are saying that this shows that there's a decline of BJP in the state of Uttar Pradesh. However, BJP is now maintaining that there's nothing wrong. This is misinformation, and the BJP is strong in both state as well as said. कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास, उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन